Hello, good afternoon. The afternoon time, right? So we don't know when will be the result will come out. At max we can write some questions, yeah, discuss some questions, so that we have to be prepared, right? Jodi, what I think, then after 2 months we will be writing. You will be writing all the mains answer, and problem is that you won't be writing in winter. You will be writing in summer, right? So take a problem while writing, because writing all 25-30 pages, then it takes a lot of effort, lot of toll in your body, right? So take a prepare ho, mentally prepare karo, है ना? Stop writing in जदि AC room न बसिकी जदि बाहर लिखी परसो, then you write that, है ना? That's also a significant aspect of your preparation. The first test नहीं थी, so किसी questions होची, I want to discuss with you political theory ऊपर chapter was political theory, so there are many questions, है ना? 6 question थिला, short test थिला, सेति पे मु 100 mark question बने थिले. तो first question थिला, examine the liberal theory of state in contemporary politics, right? Liberal theory of state in contemporary politics. It's talking about liberalism. Make a comparative assessment of Greek perspective of justice with roles and concept of justice. This was the UPSC question, है ना? तो arbitrary you have to write, है ना? Contemporary challenges को तुम लिखी बार होची, है ना? Historical challenges no. So OPSC कौन करे? They translate such questions and put in our OPSC paper. Same question, words change है तो. तापरे comment on the conception of equality in the work of Dworkin. If you know about Dworkin, right? He was a liberal thinker, and he was the one who wanted to infuse equality with opportunity of liberty. He tried. Tabre, state is the keystone of social architecture. Harloth Lasky. Tabre, comment on the post-colonialism theory of state. State is the keystone of social architecture. Harloth Lasky, right? Talking about two states, pluralistic and monastic, and I will comment. This is a question which was asked in UPSC also. Tabre, comment on post-colonialism theory of state. Tabre, discuss the various ideas of theories of sovereignty. It actually got 20 marks as per unit. Just deadly. Suppose in part 1, part 2 bits दियंती ना, तो say एक question का bits as per you, है ना? Various ideas on theories of sovereignty. Theories on sovereignty. Actually कौन sovereignty evolve होइतला, कौन idea अच्छी, ताबी से डे लिखिया रही. And while attempting all the answers ना, it should be like you are giving an answers of PSIR. एमित नहीं कि तो मैं GS बढ़ा लिखचो. The best thing about PSIR है ना, you will get marks. जदि तो मैं PSIR बढ़ा लिखचो. If you start writing like GS, then से तुम्हारा answer को तुम कितना 300 to 250 है जो तुम जाने परिबोनी. If you start writing like PSIR, like an expert, subject matter expert, then 300, 330 भी पाई जीवो, 350 भी पाई जीवो. Just if you write, ना कहेंगे सेठी SME check करोंती, माने expert check करोंती, not GS वाला, right? So I will go on to the first question. Examine the liberal theory of state. I have brought the answers, okay? So तुम refer भी करी परियो, but right. So first question is that examine the liberal theory of state in contemporary politics, right? It is the first question. Okay, है ना? So देखो, this is the first question, है ना? You have to write like as if you are writing a pro PSIR answer, है ना? तो देखो, you have to catch the keywords. Keywords एडी कौन? Liberal theory, है ना? Liberal theory is the keywords. It is a keyword, है ना? तो हमको एमिति लिखी बार जैसे तो मैं जाने चो examiner what you are asking and I know I got the point, है ना? मत से जिनसे hit करिया पड़ियो, से जिनसे लिखियो. एमिति ना कि तो मैं liberal theory को ताको ता genesis को explain करो, no? You start from the point where it can feel that okay, the student has trust the answer from the first part itself, है ना? तबरे suppose एडोड introduction दे चला तो मैं पढ़ देगा, but if I start as an introduction, मुझे दी कौन introduction दे परिबी. Liberal theory is one of the most prevalent ideas of domestic as well as international state, है ना? It's the most prevalent idea of domestic as well as international state, and in today's world it is facing contemporary challenges from different school of thoughts as well as
political economical development बुझिपार इट्स फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स माने कोन मार्क्सिस्ट राइट नियो मार्क्सिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस माने कोन आज का डेट रे इकोनॉमी डेवलप होची कोडी इकोनॉमी कोडी कोन तमे एक्सप्लोड हो जाओ कि बेसी एक्सप्लोड होची कि कम एक्सप्लोड होची या सेंस ऑफ रिसेंटमेंट सेंस ऑफ व्हाट माने लिबरल थियरी को अपोज करया पे बहुत सारा रिसेंटमेंट बाहर छे पे से जिनसोडा से कहू छला ओके तो मु लिखि परिबी जदि मु इंट्रोडक्शन ए पार्ट लिखली मु बॉडी रे भी लिखि परिबी है ना लिबरल थियरी गिव्स प्राइमेसी टू इंडिविजुअल राइट्स है ना इट गिव्स प्राइमेसी टू इंडिविजुअल राइट्स द इंडिविजुअलिज्म है ना देखो वेयर आई कैन राइट है ना देखो लिबरल थियरी जोटा अछि ना it gives primacy to individual rights है ना तापरे what I can write it has the concept of individualism है ना it accommodates the concept of individualism right एटा मु लिख परिबे तापरे if we add humanism 1 minute I need some space right yes I got it ठीक है so it मतलब कौन liberty it adds the concept of individual liberty है ना से जिनसोडा मु कहतली तापरे liberty has accommodated the principles of what Kant कौन Kant रो humanism right it has adopted humanism also ए जिनसोडा भी तमे चाहिले भी लिखि पारिबो you have to show that you are like a pro है ना PSIR pro तमे you are not writing any GS answers है ना तमे ए जिनसोडा भी लिखिबो but as per now it has been facing many contemporary challenges right contemporary challenges रे मु कोन लिख परिबी देखो contemporary politics कथा कहूछ right देखो okay what's going on okay I have to rub this 1 minute clear है ना contemporary challenges देखो liberal रो तमे definition तो देतलो ना individualism which promotes individualism then liberal theory of economy liberalization state at back foot है ना state को पछू कर दियो then market be the god है ना ए सब जिंस तो मैं लिखि पारे मैं ऑलरेडी देई छी हैला मु जस्ट कहू ताकि you can write you can attempt है ना एमिते नै कि तुमको गोटे पैरेलल थिंग्स देखिया पड़े you can attempt anything right प्रॉब्लम है कि it has been facing contemporary challenges है ना contemporary challenges कौन contemporary challenges माने कौन like Samuel Pink Huntington गोटे जिंस कहता मन अछि civilization clashes है ना it has been facing challenges from civilization also like कौन मु कहि परबी Islamic fundamentalism है ना Islamic fundamentalism then the rise of right wing government rise of right wing government in west कहेंगे west ही आनिथिला तमर कोन liberalism challenge आनिथिला liberalism was introduced as the west but right now it will be I mean सेठी कोन rise of right wing government right तापर Islamic fundamentalism तापर कोन अछि the cultural clashes जोड़ा अछि है ना so it has been facing various setbacks है ना these are the challenges what I have found है ना आमे एडा भी लिखि परिबा चाहिले तापर आउट कथा लिखछि तापर हमर कोन लिख परिया पोस्ट कोविड है ना वेरी कैंडिडेट है ना पोस्ट कोविड चैलेंजेस है ना देखो आंसर राइटिंग गोटे कला अछि तमे जदी मु जस्ट कहि देबी ना कोन राइट पोस्ट कोविड चैलेंजेस माने कोन अछि जो लिबरल प्रिंसिपल्स यूज करी कि हमें कोन स्टेट को बैकफुट आनतलु लाइक कोन ट्रिप्स है ना ट्रिप्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गोटे कथा कहबी वी कैन राइट अबाउट द वैक्सीन्स है ना एस्ट्राजेनेका मॉडर्ना
they never try to share their formula कहीं से माने बुझी पारछो it's one of the problems after माने कोविड टाइम रे जो प्रॉब्लम हेतला कोन करला WHO को माने इश्यूज हेगला ना दे माने ताकर जो कोन जो वैक्सीन प्रोग्राम थिला ता भितरे माने सहयोग करनो थिले से माने ट्रिप्स रो वेवर देनो थिले IPR इश्यूज होतले से जिंस तुम लिखि परिबो तापरे कोन राइस of China authoritarian government अरे liberal but problem कौन है जी authoritarian government it faced challenges from where from China right जी मिंग कौन हाँ या 11 पिंग कौन तक right है ना इनको कहा था नो ठीक है so these are one of the kind of challenges they are facing in today's world right Islamic fundamentalism है rising right wing government then post covid तापर गोटे जिंस लिख परिबी 2008 9 रे कौन हेतला फाइनेंशियल क्राइसिस हेतला राइट बुझी पारछो तो दिस चैलेंजेस आई कैन राइट कहीं तुम कहो लिबरल ऑर्डर वाज वेरी गुड बट प्रॉब्लम है कि हम केते सारे चैलेंजेस लिख देले बुझी पारछो तो आ भितरे मोटे कहि परिबी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव रे कहि परिबी मार्क्सियन कोन कोए द जो लिबरल्स अछन ना दे यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट कोन डिफरेंट ग्रुप्स है ना टू पोस्टपोन द चैलेंजेस ऑफ रेवोल्यूशन तो जान जो रेवोल्यूशन आसे ना लिबरल्स विल लिबरल्स आर रूप चेंज कर दो लाइक मॉडर्न लिबरलिज्म पळे आसीबो या तमे न्यू लिबरलिज्म को पळे आसीबो बुझी पारछो एडा भी तमे चाहे लिख परिबो बट जदी जदी 10 मार्क्स मार्क कर दोची विद इन 200 वर्ड्स तमे लिखि परिबो तो दिस आर वन ऑफ द चैलेंजेस बाय मार्क्सिस्ट ना तबरे पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन आउट दिन समय कहि परिबी द कोडा पेरिफेरी टू कोर ए जो जिनसटा देथला पेरिफेरी टू कोर मतलब रिसोर्सेस आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड रिसोर्सेस आर मूविंग टू वेयर एडा जदी पेरिफेरी हबो एडा ला कोर बुझी पाछो रिसोर्सेस आर मूविंग टू हियर बुझी पाछो माने एडा अफ्रीका हे परिबो एडा वेस्ट हबो जो सेंटर अछंती बुझी पाछो एडा ओडा मॉडल तुम चाहिले देई परिबो है ना बट यू हैव टू कोट the thinker which propose such model more तो मन नहीं but I will give you the answers so that you can check है ना तो these are the some of the challenges which are faced by the liberal world order right तो देखो है ना देखो तो एठू मु लिख देली है ना तो इंट्रोडक्शन तो लिख देली है ना however liberalism has faced change from different ideological schools such as Marxism conservatism and personal critics tapare let me do this right okay so you can see this so आरम आंसर थोड़ा दे दीजिए कोन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस देन कल्चरल सिविलाइजेशन देन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जोटा कि हंटिंगटन थीसिस देथला तापरे राइट विंग पॉपुलिज्म क्राइसिस ऑफ लिबरलिज्म तापरे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ट्रिप्स एंड WTO इश्यूज देथला नोबडी वाज विलिंग टू शेयर देयर वैक्सीन फार्मूला तो लिबरल के फायदा कोन अछि बुझी पाछो राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन चाइना एंड लिबरल रिट्रीट है ना चाइना मॉडल गेन मोर ट्रैक्शन in the coming in the coming decade कहेंगे 7 is they are the second largest economy they are challenging US's sovereignty बुझी पारछो US's economic sovereignty not other sovereignty ठीक है तापर okay the third questions ना it कौन देजी make a comparative assessment of Greek perspective of justice with roles and concept of justice right so just think about this है ना आंसर कौन डिमांड कौन हम से पचार है ना देखो एटी कौन लिखा है लेट मी दिस है ना मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विथ रोल्स एंड कांसेप्ट ऑफ जस्टिस देखो एक्चुअली एटी डिमांड कौन अछि यू हैव टू कंपेयर ना ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस माने कौन Greek माने कौन Greek perspective of justice he is talking about whom Plato Aristotle बुझी पारछो
तांकर जस्टिस कोन देथिला और रोल्स कांसेप्ट ऑफ जस्टिस कोन थिला राइट प्लेटो अरिस्टोटल कोन देथिला रोल्स कोन देथिला देखो प्लेटो और अरिस्टोटल जो कांसेप्ट ऑफ जस्टिस देथिले दैट वाज प्रेवलेंट इन medieval ancient time but रोल्स जोड़ा देथिला it has मतलब it has unique blend of modernism मतलब सी मॉडर्न चैलेंजेस को नहीं करी तार जस्टिस रो कांसेप्ट देथिला राइट आउट कथा तापर अंकुर कोन अछि जो ग्रीक पर्सपेक्टिव थिला ना दे तांकर द आइडिया वाज बेस्ड ऑन नॉर्मेटिज्म है ना बट प्रॉब्लम है कि हमर रोल्स रे कोन थिला द आइडिया वाज बेस्ड ऑन व्हाट pragmatic values है ना pragmatism है ना ठीक है border issue है please deal with it है ना तो next time it won't have this है ना so एटा थिला तो जल्दी जब हम पढ़ी छ तो ग्रीक जो पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस अछि प्लेटो रेटले देयर अप्रोच वाज मोर व्हाट टेलियोलॉजिकल माने बुझी पारछो एंड जस्टिफाइज द मींस मतलब प्लेटो कोन कोथला फिलोसोफर किंग है ना गोटे फिलोसोफर किंग दरकार ही इज अबव द लॉ राइट से जिनसटा देथला किंतु हम जो रोल्स थिला हिज अप्रोच वाज मोर डिओंटोलॉजिकल माने कोन अछि डिओंटोलॉजिकल माने कोन ही विल टेक व्हाट सीतार जेतो सीतार थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाउछ ना he will consider the factors responsible in the primary मतलब he took what हमारा humanism है ना रोल्स took about humanism approach है ना humanism approach को लेकर he gave the theory but एटी कौन theological the end वाला approach एटी कौन starting से humanism नहीं था कहीं की रोल्स was an answer to what utilitarian traditions है ना utilitarian traditions कहीं जितना मैं utilitarian देखो ना utilitarian concept कौन थिला greatest happiness to greatest number है ना जदि greatest happiness to greatest number जदि होची प्रॉब्लम कोन अछि सपोज 140 कोटी अछंती you are giving happiness to 80 crore बाकी 60 crore कोड जिबे so it is you are following what utilitarian traditions but रोल्स कोन थिला deontological है ना he added humanism है ना एक्चुअली कोन थिला रोल्स जितलो ए जो थ्योरी टानथिला it was माने west was having crisis 1970s रे west was having some crisis like liberal order crisis बहुत सारी inequality फैली जातला सेठी I mean inequality was spreading in west so सेठी discontent feeling आसला so Rawls came with this theory of justice book in 1971 to give a solution to this crisis ए जिनसरा होतला राइट तापर आउट कथा कुछ है ना तमे जदी एठी देखिबो let me do this okay देखो एटी कौन देछ है ना मेथड ऑफ जस्टिस ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो जस्टिस इज अचीव्ड थ्रू विजडम अधेरेंस टू द नेचुरल ऑर्डर राइट एटा देछ तापरे मेथड ऑफ जस्टिस सी कौन करे प्लेटो अरिस्टोटल टॉक अबाउट वर्च्यू है ना गुडनेस दैट्स हाउ यू अचीव जस्टिस एटी कौन अछि मेथड ऑफ जस्टिस लीस्ट एडवांटेजेस कथा कोतला रोल्स डू यू रिमेंबर दिस कौन ऑर्डर लेक्सिकल ऑर्डर दोतला लेक्सिकल ऑर्डर राइट लेक्सिकल ऑर्डर है ना 1 2 3 रे कौन दोतला मतलब ही वाज ट्राइंग टू गिव जस्टिस द लीस्ट एडवांटेज मतलब एटी थिला कौन लीस्ट एडवांटेज रे गोटे थिला कि व्हाट द liberty he was favoring liberty then equality of opportunity then equality एटा गोटे परफेक्ट लेक्सिकल ऑर्डर देथिला ये तो मैं रिमेंबर करछो रोल्स थ्योरी रे है ना तो इट वाज लाइक दैट है ना तापर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना अरिस्टोटल वाज फाउंड ऑफ गिविंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिवॉर्ड्स राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कम्यूटेटिव जस्टिस रेट्रिब्यूटिव जस्टिस अरिस्टोटल रे कोन थिला ही ऑलवेज वांटेड टू गिव रिवॉर्ड्स माने जे भलो करछि तापे आई मीन यू मतलब यू प्राइज देम है ना बट एट द सेम टाइम जे किछि खराब करछि ताको रेट्रिब्यूटिव जस्टिस दियो मतलब गिव हार्श पनिशमेंट अरिस्टोटल से जिनसटा कहतला जदि ताको मु एक्सट्रापोलेट करबी रोल्स थ्रू रे रोल्स कोन कहतला द लीस्ट एडवांटेजेस शुड गेट द डिफरेंस प्रिंसिपल
different principles जानछो तो say liberty, equality of opportunity, then equality दरकार ना different principle रे you are focusing on the least advantage people, right? Lexical order जोटा आज obviously I haven't taught, so if you know then you can write, right? तापर retributive justice, Aristotle also discussed justice in terms of correction, retribution. It focuses more on fairness in distribution rather than retributive aspects. Obviously कौन कहूला जो disadvantage होते सी रोल्स तांको पर फोकस करूला so that they can be in advantage positions after retributive justice. तापर बुझी पाला then treatment of disadvantaged group है ना, no specific policies for देखो problem कौन अच्छी है ancient time रे they were not focusing on the disadvantaged group, right? But modern time requires modern solutions, so Rawls was focusing on the disadvantaged group through Kantian humanism, Immanuel Kant humanism, right? बुझी पाला because deontological approach नोटला ना, because he was focusing on humanism, then the end. तो ए जिनसोरा एट लिखा है treatment of disadvantaged groups. This is how you can write the questions, right? तो एटा थिला ये. So while writing you can give some conclusions like this philosopher and Rawls both wanted to establish justice, but they diverge in their methods and priorities. Obviously ancient and modern the method will be different, right? कहेंगे सेतोल से मैंने virtue goodness अपरे से मैंने justice बनाऊतले, but Rawls कौन modern problems है ना, एडी virtue goodness नहीं, you have to show some procedural justice कहेंगे disadvantage लोग को बहुत ही गले, right? सेतिपाइन से और lexical order देता so that he can bring justice to the least advantage solution, least disadvantaged people, right? है ना? So right there like this, despite these differences, both perspectives acknowledge that justice is fundamental to well-ordered society, whether through virtue or structured fairness, right? ठीक है. तापरे comment on the concept of okay. Third question, comment on the conception of equality in the work of Dworkin, right? देखो Dworkin is one of the liberal thinkers है ना, which try to infuse equality within the opportunities of liberty. देखो जो liberal thinkers था ना सेमाने टिका sociology को distance था, they make some distance from the socialism part, but Dworkin is one of the few thinkers who try to infuse socialism with liberty. He tried to bring his own method of justice, right? देखो है ना, while writing such answers ना तो you should quote the book, but है ना कौन दे चेटी Dworkin in his book Sovereignty Virtue है ना presents a theory of equality that emphasizes equal access to resources than social equality. He argues that society should focus on resource equality, ensuring that individuals have a fair starting point without continuously intervening in market outcomes. देखो ADC कौन कोच? He was talking about just fairness है ना, just fairness. तो मैं यदि if I try to compare ना Dworkin, तुम जानते हो Dworkin आगुटे क्यों रच Nozick जानते हो Dworkin and Nozick was libertarian. ये कौन हो? ये से liberal, right? जदि देखो Nozick कहबा एतिया कारण है जदि मु जदि कहिलेन तुम जानि परिबो Nozick was a critic of Dworkin. Both were belong to same school of thought, but he was libertarian. But egalitarian theory जानते हो Nozick रो. Actually Nozick कौन कथा कहूची? The progressive taxation which we impose on the people है ना, it is actually an useless thing है ना. Progressive taxation किए impose करे? State करे. But state is a night watchman. तमरा दायरा बहुत कम रहेगा कथा. But problem है कि inequality इतने बढ़ ना. So progressive taxation is very important. So that टिके inequality कम करे. जो दी तमें गरीब आदमी जो दी 10 rupees कमाऊची and taxation जो दी 10% होची 1 rupee आस्ची. Say time रे
जो अमीर आदमी अच्छी 100 रुपीज यदि तार सैलरी अच्छी, डू यू थिंक 10% पड़ो टैक्सेशन? नो, दैट इज नॉट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. मे बी 30%, 30 रुपीज. 10% पड़ते 10 रुपीज देता, ये 1 रुपी देता, बट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाइक नहीं हम 30% करूँ. तो मे बी तांकर लिबर्टी को तुम टिके ब्रेक मार्च कहीं सी हार्ड एंड मनी ना, दे अर्न थ्रू वेरी देयर ओन हार्ड वर्क, बट सेटा नोजली क्रिटिसाइज कला तमें से अप्रोच नहीं पारिबनी while imposing such penalties है ना. but Dworkin कौन कथा कहतला? Dworkin was talking about equality of resources, not social Dworkin never talks about social equality है ना. he always talks about equality of resources. Mukoni, he is one of the most मतलब he was one of the thinker who tried to infuse equality with liberty, right? so जिनसोटा से कहतला actually कौन he wanted to get what egalitarianism in the society. That's why Dworkin proposed the theory of equality of resources, not outcome. Outcome कौन? Socialism approach, right? तुम जो देखियो मार्क्सियन कौन कहतला सब समान ही जीवो, but जेहेतु he was a liberal thinker, he was not focusing on social outcomes, social equality. जो outcome was social equality है ना. he was not focusing on social equality, he was focusing on resources can be distributed. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ theory ଦେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି, this one clamshell island hypothesis. clamshell island hypothesis जो ଗୋଟେ theory ଦେଇଥିଲା. देखो एठी से कौन करथला, it is similar to what? similar to wheel of ignorance. देखो जो रॉल्स theory ଦେଇଥିଲା, देखो एठी कौन हैला, से ଗୋଟେ hypothesis देला, some people were going to some island, other island, the ship was got wrecked and से माने ଗୋଟେ island stuck हे गेले, ठीक अछि. now they have to start their life afresh बुझी परछ तो, they have to start from scratch. सेति पे कौन कले, they decided clamshell जोड़ा kind of शंख टाइप, right? दीटा साइड इक्वल थाए देखि दबो. clamshell कौन कले, तो जेहेतु तुमको कौन करिया जा, तुम पाखरे किछि नाही, सो सी कौन कले, इनिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन थबो ना, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ clamshell तुम इक्वेट करो clamshell एज मनी है ना, एज मनी. इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन तुमको फेयर करियर अछि, राइट? इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन तुमको फेयर करियर अछि, राइट? तो to explain this theory, Dworkin uses a desert island through experiment. Imagine survival standard on island with equal claims to resources, right? They distributed resources through an auction system where each person based on their preferences. Okay, देखो एथे से कौन कला छ, let me yeah, okay, देखो so he was proposing an auction through which initially समस्त equal clamshells मिल जिवो, तापरे कोन वर्क डिस्ट्रीब्यूट हबो. मु जदी कारपेंटर जे मु कारपेंटरी करिवि, जदी मु जदी जानि छी कोन घर बने घर बनेबी, घर बने कोन वुड दरकार, तो वुड रो भी कोन डिस्ट्रीब्यूशन हबो ता भितरे. एंड मेथड कोन clamshells जो वुड दबो. सपोज मु समस्त ताबे आई कैन डू 11 हाउसेस बुझी पारछ, मु मो पे घर बने देबी, मु तांको पे बने देबी, से हिसाब रे मु clamshells को नेबी. से हिसाब रे कोन हबो, प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइस जो अछि ना, प्राइस रे वर्थ पता चल जिवो. से मार्केट रे यू विल नो द वर्थ ऑफ द प्राइस, बुझी पारछ. सेते पई Dworkin कौन प्रपोज करला, लेट मी रब दिस है ना. Dworkin कौन प्रपोज करला, एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन, राइट? देखो आउड लगी एंडोमेंट सेंसिटिव ऑक्शंस है ना. फर्स्ट जो एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन माने कोन, तमे clamshell डिस्ट्रीब्यूट करतलो व्हिच वाज फेयर है ना, समस्त इक्वल clamshells मिल गेल. तापर कोन अछि एंडोमेंट सेंसिटिव ऑक्शंस, मतलब नाउ यू हैव टू distribute the resources according to the work you perform. बुझी पारछ, मु जो काम रे एक्सपर्ट अछि से हिसाब रे वर्क करे. मु जदी ता पई 11टा घर 10टा घर बने देबी, 1 for me and 9 for others, so I will take what wood and I will take wood and I will give my clamshells. बुझी पारछ, लेन देन होछि से हिसाब रे मत करे अछि. प्रॉब्लम है कि एठी गोटे दीटा लक थाए, गोटे ऑप्शन लक थाए आ गोटे ब्रूट लक थाए हैला. ब्रूट लक माने कोन, द पर्सन हु हैज डिसएडवांटेजेस. सपोज इफ आई एम गोइंग टू डू द ड्यूटी बट मोर प्रॉब्लम अछि कि मोर गोटे हाथ आई एम
what दिव्यांग हो जाए सो आई विल बी हैविंग मतलब मोर काम करिया क्षमता कमी जीवो सो दैट इज कॉल्ड ब्रूट लक है ना सेथि पई Dworkin also proposes compensation for him बुझी पारछो ता हिसाब रे ताको कंपेंसेशन भी मिलिबो बुझी पारछो तापरे आ गोटे हला कि ऑप्शन लक मतलब तमे जो बे काम करिवो राइट तमे जो काम करिवो ना तापरे इट्स अप टू योर वर्क तापरे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करिवोनी तमे जेम काम करी पैसा कमेबो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन लक राइट इट लिखाई है ना outcomes are voluntary risks business the state should not compensate for these choices किंतु ब्रूट लक रे कोन अछि circumstance beyond one control being born into poverty disability society should correct through this redistribution बुझी पारछो एटी डिसएडवांटेज सेक्शन को मिलछि एटी जो डिसएडवांटेज है जे काम जान चंदी तांको पई ठीक अछि नाउ सोसाइटी विल नॉट कंपेंसेट देखो यदि मको रॉल्स थ्योरी से कंपेंसेट कंपेयर करबी रॉल कोन कहउतला जे सबसे डिसएडवांटेज अछि ना गवर्नमेंट विल इंटरफेयर देयर आल्सो बुझी पारछो बट एठी कोन गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवोनी रॉल्स आल्सो लिबरल बुझी पारछो बट he gave a theory which is more different than Rawls right तब है ना while writing answers ना just okay while writing answers ना you should write the criticism part also है ना Dworkin's है ना फर्स्ट क्रिटिसिज्म कौन देखिए अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच राइट अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच कौन अमर्त्य सेन इज ए व्हाट इज ए पॉजिटिव लिबरल अमर्त्य सेन इज ए पॉजिटिव लिबरल ठीक अच्छे सी अमर्त्य सेन कौन कहे तमे लोकर कैपेबिलिटी को फोकस करो नो यू डोंट नीड टू गिव देम व्हाट मनी या कंपनसेशन करले ठीक होबनी बट इफ यू फोकस द कैपेसिटी मतलब इंक्रीज द कैपेसिटी ना देन ही विल प्रॉस्पर सेते पई अमर्त्य सेन लाइक केरला मॉडल देन गुजरात मॉडल ही लाइक्स केरला मॉडल ओके नाउ गुजरात मॉडल भी ऑब्वियसली कैपेबिलिटी को फोकस करलानी बट इनिशियल क्रिटिसिज्म बेलको से कहउतला केरला मॉडल इज फार बेटर देन गुजरात मॉडल राइट तो ए जिनसटा करतला तापर कंपैरिजन विथ रॉस डिफरेंस प्रिंसिपल है ना एट कौन रॉस जस्टिफाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट हिज लाइफ व्हाइल डॉर्किन स्टॉप्स द स्टेट इंटरवेंशन बुझी पारछ तो रॉस जो जस्टिफाई करतला कोडा दिस वन डिफरेंस प्रिंसिपल जो डिफरेंस प्रिंसिपल थ्रू स्टेट हस्तक्षेप करिवो देन ही विल जो इनइक्वालिटी फेस करछन तांको में स्टेट काम करिवो बाय द यूज ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल किंतु एटी कोन करतला once you go for the option luck यदि option luck पर कौन हबो स्टेट इंटरफेयर करिवोनी नाउ इट्स ऑल अबाउट योर लिबर्टी योर अपॉर्चुनिटी तम अपॉर्चुनिटी केम तमे एनहांस करछो से जिंसटा कोतला राइट सो कंक्लूजन को कबी Dworkin's theory of equality provides a market friendly yet just framework equality ठीक अछि you write तम बेटे लिख दै छी so that you can write how you can approach the questions hope you're getting मु obviously पढे ना तो मते बे डिफिकल्ट होची while teaching all these things right okay the third question since society is federal authority must be federal एटा की कहै छी एटा लास्ट की कहै छी हां एटा लास्ट की कहै छी since society is federal and authority must be federal काहे की देखो while writing such answers ना तो मैं इंट्रोडक्शन में जाने दबो कि मु आई गॉट द कंटेक्स्ट व्हाट यू आर आस्किंग राइट मु जानि के तुम कोन पचारछो देखो एक्चुअली ए जो कंटेस्ट दिसला ना ही वाज एडवोकेटिंग प्लूरलिस्टिक मॉडल है ना ओवर मोनेस्टिक मॉडल देखो लास्ट की वाज एन एडवोकेटेड प्लूरलिस्टिक मॉडल एट मु लिखि दै छी a leading advocate of pluralistic sort of thought challenged the monistic theory of sovereignty proposed by John Austin and Jean Bodin. Okay, monistic theory actually the monistic theory actually got it John Austin and John Bodin hela tapare while Austin and Bodin argued for an individual sovereignty authority last की asserted that society is inherently federal है ना जदि भी तुम John Austin John Bodin लिखनो ना you can also write Hobbes sovereignty also
हैला होप ऑफ सॉवरेनिटी ऊपर तुम लिखि पारिबो होप ऑफ सॉवरेनिटी कोन कोतला द सोसाइटी इज ब्रूटिश राइट people are selfish people having self seeking individual सेति पे कोन से एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कथा कोतला यू कैन राइट दिस आल्सो सेटू ए जो जिंसडा मु एटा मोनास्टिक थ्योरी मोनास्टिक संगे लिंक कर परिबी चाहिले लिंक कर परिबी राइट तो he was a propounder of pluralistic thought which was an criticism to monistic model ए जिंसडा मु कहूची है ना तापर है ना देखो देखो लेट मी बिट एक्सप्लेन यू ठीक है जेतल से प्लूरलिस्टिक मॉडल आनथिला ना जो प्लूरलिस्टिक मॉडल थिला ना ता भितरे दीटा मॉडल थिला गोटे मॉडरेट थिला आ गोटे एक्सट्रीमिस्ट थिला है ना एक्सट्रीमिस्ट थिला मॉडरेट भितरे लास्कीर स्कूल आसला है ना तापर एक्सट्रीमिस्ट रे मक्काइवर रो थॉट आसे देखो लास्की कौन होतला सोसाइटी इज फेडरल देखो लेट मी एक्सप्लेन देखो 1914 1919 है ना देयर वाज वर्ल्ड वॉर राइट देयर वाज वर्ल्ड वॉर सेतले वुडरो विल्सन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस पोटस थिले से प्रपोज करथिले कि कौन प्रपोज करथिले लीग ऑफ नेशंस है ना लीग ऑफ नेशंस कैन बी देयर टू चेक नेशंस मतलब किसी नेशन जदि अटैक करूछि ना ता ऊपर चेक भी रखा था सॉवरेनिटी गोटे नेशन पाकर सॉवरेनिटी अछि बट एट द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल सॉवरेनिटी सेटा के चेक करिवो सेटा यूनाइटेड नेशंस चेक करिवो सेतरो लीग ऑफ नेशंस थिला किंतु लीग ऑफ नेशंस कुडंट कल्मिनेट एन आइडिया काहे यूएस कांग्रेस सपोर्ट करनतला इंटर वॉर पीरियड गला 1944 रे या 1939 44 पुनर वॉर आसला कोन ला राइज ऑफ हिटलरिज्म ओके too much of power concentrated in one hand मु ताको मोनास्टिक थ्योरी कोइ परिबी सेपट पुनी वॉर आसीगला वर्ल्ड वॉर आसीगला राइट तापरे कोन आतला एडा है मोनास्टिक सॉवरेनिटी हिटलर इज लाइक कोन पैलिंजेनेटिक नेशनलिज्म जो कथा कहितले टू मच ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड मतलब ना ताको चैलेंज करे पे के नांती है ना तो सेटी कोन किछि फेडरलिज्म थिला नो मुझे इसने आइडिया कोछि सो दैट यू कैन रिलेट राइट तापर कोन आला वंस वर्ल्ड वॉर सरला परे नाउ व्हिच केम यूनाइटेड नेशंस राइट तो आमे देखु जो स्टेट भीतर फेडरलिज्म अछि इंटरनेशनल पाखरे भी फेडरलिज्म अछि ना यूनाइटेड नेशन जदि गोटो स्टेट को आको अटैक करे बट दे वोंट अलाउ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रे बिडिंग हबो यस फेलियर भी हेछि बट एट द सेम टाइम कोन कि यूनाइटेड नेशन इज फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना यूक्रेन रशिया जो वॉर हेतला तार स्पिल ओवर तो एते जाग तो है ना इकोनॉमिक स्पिल ओवर हेछि बट वॉर स्पिल ओवर तो है ना इजराइल गाजा टिके स्पिल ओवर हेछि लाइक ईरान एंड इजराइल भीतर हेतला बट एमित ना कि पूरा वर्ल्ड वर्क हे जेतला नो देयर बिकॉज़ देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस कांगे सैंक्शंस बगे देबे ट्रेड सैंक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शंस पॉलिटिकल सैंक्शंस तो सेति में इटा डिटर करे सेति में व्हाट द सॉवरेनिटी इज फेडरल बुझि पाछो एमित ना कि तुम मन इच्छा नहीं परिबो आज कालिका डेट रे नॉट इवन ट्रम्प चाहे का वॉर करि परिबोनी चाहे भी करि पारिबो बट देयर विल बी सम रेपरकशंस राइट से जिनसडा मु कहतली है ना सो लास्ट के कोन कहतला sovereignty cannot be concentrated in a federal government right देखो लास्ट की आर्ग्यूड फेडरल सिस्टम sovereignty cannot be single point not a one power center right सेति पे मतलब मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आज का डेट रे वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग यूसीसी ना वी आर फेसिंग प्रॉब्लम टू इंप्लीमेंट यूसीसी राइट काहे कि जो रिलीजन इज आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बुझी पाछो तमे तांको न नै कि तमे परि परिबोनी सो समवट पावर इज बीन डिवाइडेड राइट तो गोटे एग्जांपल देली तो सेतल कोन अछि फेडरल गवर्नमेंट कोन दिसला सोशल ग्रुप्स पॉलिटिकल यूनिट्स पावर सब डिवाइडेड अछि तो लास्ट की एडवोकेटेड दैट मॉडल प्लूरलिस्टिक मॉडल है ना तो and why he was why he advocated because he wanted to oppose the monistic theory of the state है ना monistic जोटा मैं तुमको कहली काहे सिंगल अथॉरिटी शुड मोनोपोलाइज मतलब लास्ट की नेवर वांटेड ए सिंगल अथॉरिटी टू मोनोपोलाइज इन सडा कहतला मैकेवर कोन कहतला स्टेट इज द मतलब he gave the concept of service state मतलब
Machiavelli was one step ahead. Mukoni, Machiavelli was extremist. Pluralism रे भी extremist थिला. Machiavelli gave the concept of sovereign state माने कौन? State रे तो काम वाला गोटे service दवा पे. Like we are ordering food from Zomato, right? Zomato service दउची. यदि तो मैं दो ना, then I will complain. That's it. It's just a part of service, nothing else. Machiavelli was too harsh, right? Because he introduced the concept of service state, which functions as a coordinator rather than absolute power. The state exists to serve different institutions. Yes, they exist to serve different institutions, not to dominate them, aligning with देखो जितने हेले भी ना last की हो या this Machiavelli होची ना, they never wanted to finish state. ते माने जितने भी theory देले federalism ना, at last they will say that state should be above everything, but not with monastic part, with federal. जानिचु because in modern world state जो तम थबो ना तारो legitimacy United Nations भी हवा कथा, suppose European Union हवा था, someone should be considered as someone should be legitimized. सेटा किए हुए now, not a political associations, not groups, that is legitimized by the group. That is, I mean, what nation should be legitimized by international institutions like United Nations, European Union. The need for the primacy of the state in the world. Why state is needed? Despite this argument, modern state remains the central authority due to its role in conflict resolution, governance, international diplomacy. जिनसोटा तुम कहूली बुझी पारछ तमे ए जो जिनसोटा ना जो कंक्लूजन जोटा दउछ ना लास्ट की एम्फसाइज फेडरल नेचर ऑफ कौन करला देख कंक्लूजन एमिति भी लिख परिबो दो लास्ट की प्रपोजल्स प्लूरलिस्टिक थियरी but still he believed ultimate sovereignty in the hands of state, because in the international domain there is only one state who can be legitimized, that is the state itself. तो मैं निजे वर्ड से भी लिखि परिबो बुझि परछ कोन लिखा छै even within a federal structure a degree of centralized authority is necessary to maintain order and unity that can be only done by the state. ए जिनसोटा से कोच okay. I will go to the next question. Discuss the various ideas of theories of sovereignty. A question to semiti bhi to asiboni. Don't worry that it will be a 10 mark questions. Eta kono theory of sovereignty. देखो एमते क्वेश्चन जब आसला गोटे तमे देई परिबो गोटे काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे परिबो. देखो sovereignty is a modern concept which is implemented in 19th and 21st century है ना, which via through state sovereignty. Okay, sovereignty मु गोटे जिनस कहि परिबी this theory of sovereignty रे मु से हॉब्स को आनिबी है ना, हॉब्स को आनिबी है ना. Hobbes gave the ultimate idea of sovereignty. Thank you. According to Hobbes, man is brutish, selfish, self-seeking individual. Sethipai se kon kothila there is someone should be there who can control this few. Out in so covenants of sword na, covenants of sword without I forgot na. Anyways, okay, I got it. Covenants without sword are equivalent to gospels of words. Mane at least someone should be there who can act as an iron hand. Je tome bhul karcho then someone should be there to punish you. Seta kon covenants of sword, covenants without sword are gospels of words. ए जिनसोटा थिला काहे कहली लाइफ देखो एटा जो हॉब्स जो देथला ना, तो हॉब्स वांटेड एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. हॉब्स proposes absolutism है ना, absolutism सेट टू कौन होउछ मोनास्टिक थियरी पढा आछ राइट. से जिनसटा तुम लिखि परिबो. देखो वेरियस आइडियाज थियरी ऑफ सॉवरेनिटी कोन लिखछो, थियरी ऑफ सॉवरेनिटी कोन थिला, गोटे प्लुरलिस्टिक थिला, गोटे मोनास्टिक थिला राइट. प्लुरलिस्टिक रे कोन थिला लास्की गोटे थिला आ गोटे कोन थिला मैकेवर है तुम से जिनस लिखि पार. मोनास्टिक थियरी तुम दे पार हॉब्स एब्सोल्यूटिज्म कथा कहि पार, हॉब्स कथा कहि पार राइट. ए जिनस तुम चाहे लिखि पार. तो आई वोंट डल इनटू दैट. जो क्वेश्चन 5 मार्क जो आसले यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स ना, राइट लाइक इन PSIR स्टूडेंट राइट. ओके, द लास्ट क्वेश्चन
Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Comment on the post-colonialism theory of state. देखो एक comment on the post-colonialism theory of state. Actually, ये क्वेश्चन टा काई पूछा जान्छ right, like a PSIR student. I mean, this post-colony emerged from the economic framework of the colonial states, which were colonized by previous colonial kingdom. तांकर इकोनॉमी रो हेल्थ तांकर स्टेट ऑफ इकोनॉमी केमिति अछि तार प्रॉब्लम्स को डिस्कस करया पे पोस्ट कॉलोनाइजेशन थ्योरी ऑफ स्टेट भारतला है ना. इट इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट जस्ट व्हाट तमे कोन डायग्नोस करछो कॉलोनियल स्टेट रो प्रॉब्लम कोन अछि ना. जेतल तमे लिखिबो ना दीटा वर्ड अछि ना while writing such answers na, so you might know about Gayatri Chakravarti. Spivak है ना. She married US citizen है ना. she कौन लिखता can the subaltern speak है ना. can the subaltern speak which was referred to post colonial states से जिनसोटा देखला एट अछि key thinkers like Edward Said and Gayatri Chakravarti. he एटा कोन Orientalism लिखतला 1978 रे Orientalism लिखतला. they were all diagnosing the problems of colonial states. तांकर economic health केमिति अछि, are they getting more exploited or not. obviously तांकर growth rate बहुत कम है ना. that is why they diagnose such problems. and एटा के लिखतला can the subaltern speak 1988 है ना. it focused on post colonial states silence marginal voices. voice of south माने कोन कोन थर्ड वर्ल्ड कंट्री कोन ना economic terms रे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोन those states which were colonized early. थर्ड वर्ल्ड कंट्री रे यूएसए ऑस्ट्रेलिया आसीबेनी काहेकि से माने से जो कॉलोनियल हैंगओवर को ओवरकम करि सारछन्ते. किंतु किछ स्टेट हो जिंदे अफ्रीका हे गला, साउथ एशिया रे किछ स्टेट हो जिंदे पाकिस्तान हे गला, अफगानिस्तान, इंडिया इज ऑलमोस्ट कॉलोनी माने दैट हैंगओवर इज गॉन एंड राइट. इंडिया चाइना बट बाकी सब कंट्री कोन अफ्रीका रो कोन रिसोर्स एक्सपोर्ट होछि कोनी पेरिफेरी टू द कोर एटी कोन रिसोर्स जाउछि राइट. फ्रॉम अफ्रीका टू माने कोडी रॉ मटेरियल्स जाउछु एटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उडा आछि सेम जिंसो चुना मारिया राइट. तो एटू रॉ मटेरियल जे एंड ताको फिनिश्ड प्रोडक्ट करि दो. इट्स लाइक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस राइट. देखो आर दीटा पर्सपेक्टिव अछि हला. मॉडर्न पर्सपेक्टिव कोन अछि एटा एबे बॉडी पार्ट लिखिबो. देखो मॉडर्न पर्सपेक्टिव कोन लिखिबो it gives the prismatic society model. prismatic society model माने कोन prism गोटे रे जीवो it will give you many colors 5 to 6 colors. problem कोन अछि ना हमर जो मॉडर्न गवर्नेंस अछि ना जो कॉलोनियल रो जो हम इनहेरिट करछु ना लाइक बाबू ब्यूरोक्रेट्स ना, this is leading to corruption inequality है ना. most authoritative regime है कोड कोड मोर authoritative regime. so these are the colors right. कहेंगे तमे previous colony रो bureaucracy नेलो now we are getting different results. actual result कौन मिलिया कथा like west but west रो result मिलनी west के developed state but we are not getting developed. तो जिनसोटा से कोइस prismatic society ए जिनसोटा हम लिख परिबो कौन लिखे how society retain both tradition and modern elements leading to inefficiency corruption clientelism in administration. ब्यूरोक्रेसी फेलियर कथा कहूँ माने कौन साउथ एशियन एंड अफ्रिकन कंट्रीज है ना. तापरे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कोर पेरिफेरी मॉडल जोड़ा कहते पेरिफेरी रो कोर को जीवो एक्सप्लॉयटेशन होउछ बुझि परछो. तो एठी कोन देसला डिपेंडेंसी थ्योरी कर दो एंड्रे गुंटर फ्रैंक्स डिपेंडेंसी 1966 देछ एक्सप्लेन हाउ फॉर्मर कॉलोनीज आर स्टिल इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड थ्रू न्यू कॉलोनियल अरेंजमेंट. IMF imposed माने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आउट अछि वाशिंगटन कंसेंसस 91 रे लिबरल ऑर्डर आनलो तापर कोन होछि एक्सप्लॉयटेशन होछि. इट्स अ चैलेंज राइट. अफ्रीकन इकोनॉमी रिमेन्स एक्सपोर्ट ड्रिवन ऑफ रॉ मटेरियल्स से एक्सपोर्ट ड्रिवन नो. तापर आउट जिंस लिख परिबो द कांसेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट. ही इज एन पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट राइट.
concept of overdeveloped state is prevalent in both Pakistan, India and other African countries. Kahin bureaucracy takes the lead, bureaucratic corruptions both hoche. So bureaucracy was there to serve the people, serve the common good, but no, now it has been compromised. Taro tankar kon achi centralized bureaucracy, obviously not military bureaucracy nahi, amaro India military bureaucracy, it's based on the example of Pakistan में military bureaucracy चलची. No, India contest को परे India contest को हम जो बाबूस थे ले बुझी पड़चा, they were corruption, मने बहुत corruption इतला, तो IAS officers बहुत सारे IAS officers बहुत corrupted थांती. So it was given the concept of overdeveloped state. तापर और हमें soft state जो गुनर मॉडल देतला, soft state, है ना? देखो soft state माने कौन हो? आमर law enforcement agencies, तापर आमर state जहाँ सब law बने चंदे ना, we are not following the law, है ना? Law has become weak. या तुम्हें कोई बार ये law is for the poor, I mean, law is not for the rich, law is for the only for the poor, right? तो सही जिन सोटा हमें को लिखी परिया, right? कौन है डा? गुरनाथ models of soft 1968 indicates how post-colonial often lack of strict law enforcement, accountability नहीं सिर्फ में तो corruption होची, political corruption होची, right? Political corruption बुझी पार्चो 90s रे बिहार जाने दो the way booth capturing rigging सब हुए, that's a failure state. Soft state को ही पर्च soft state, that is a soft state. कहीं hard state इतले ये सब जिन सब पर रोक रखता था. Just Google about the Champa case, Champa, the wife of IAS officer, I mean that was a brute, yeah. तापर कौन अच्छी किंतु conclusion में कौन कर परिया, conclusion रे हमें किसी achievements भी दे परिपा and तारो way forward भी दे परिवा. Achievements कौन हमें China India दे परिवा. India has poised to become the 4th largest economy, China 2nd largest. They have got over the colonial hangovers, right? तापर आउट दिन था महातिर मोहम्मद मलेशिया रो है ना, he always advocated for the सीसतुल आत्मनिर्भरता कोच self realizations through industrialization. तापर Singapore modern father of Singapore modern architect Lee Kin Huang है ना, he focused on strong institution and governance, Singapore model है ना, they got passed over. I mean सेमाने ये जो post-colonial state को hangover को तो मैंने pass कर सकते थे. So these are the success stories, right? तापर एब्बे कौन होची contemporary linkages कौन China रो BRI है ना, they are linking the whole world. India contest we hosted G20 है ना, we were the prime minister was advocating for G all, बुझी पार्चो, not G all no है कि he मतलब African Union got entry in G20. That's a success story. कहेंगे जो colony state थिला India भी जानी चाहिए, India भी also colony, but obviously if we help some other colonial state ना, there will be a good one. So it's a kind of achievement, right? The global South leadership in G20 reflects our strategic autonomy. Nobody can dictate us, right? If the Trump and the dynamics have been different, right? आगू जाना पड़ेगा. So this one, the post-colonial state remains a work in progress. देखो, after Trump tariff war चलची, I hope our diplomacy will sort out all those problems, right? So I tried to give some gist है ना, जो ना, if obviously मुझे कम time थिला, खबर तो कम time था, so I tried to finish. Obviously मुझे पढ़ी ना, तो I think you know all these things, तो मतलब basic explain करेगा कोई पढ़ लानी, है ना? So the second, let us wait for 2 to 3 days जो the result जो the आस्ते होची, then I will मतलब आउटर question paper बने भी, मतलब second, third, fourth test हम reschedule कर दे भी आउटर, so that you can achieve the test, when you can give the test and we will have a discussion. ठीक है? So don't waste time. आउटर कथा कहे भी, don't focus on too much on GS, है ना? GS is like lottery. Focus on your optionals, है ना? ये भी sociology अच्छा, तो go so optionals पढ़े पे. और जार language problem होची, start reading language, right? तार किसी उपाय नहीं. ओडिया जाकर problem होची, ओडिया पढ़ो. तो इतने GS को focus ना करी करी, focus on optionals and language ने दी problem होची. Optional ने दी 500 marks, right? सेडी subject matter expert check कर सुनते. सेडी GS वाला check करना. GS वाला problem है कि you write anything, it's up to his mood. जैसे काट दो तो काट दो, right? So focus on optionals, you will score good. Right? Anyways, we will see on the next class.